Hello students, welcome to YSR Academy. The final module of molecular basis of inheritance, we are going to talk about the last two topics which are pending, and those topics are DNA fingerprinting and the topic of human genome project. ये दो टॉपिक्स पेंडिंग है इस चैप्टर के लास्ट के, एंड उसको अपन रैप अप करके चैप्टर को फिनिश कर देंगे. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? वी अंडरस्टूड रेप्लिकेशन, वी अंडरस्टूड ट्रांसक्रिप्शन, we understood translation, and all the major topics have been covered. Now we are jumping on to the last part of the chapter, which is our human genome project, the first to begin with, and followed by, as I stated, DNA fingerprinting. So students, let's begin and understand the concept of human genome project. Now, what exactly do we mean by the genome? First, let's quickly understand that. Okay, when we talk about the word genome, okay, genome is nothing but the number of genes present on haploid set of chromosome. Okay, so number of genes present on haploid set of chromosome is nothing but called as genome. So आपके पास अगर मान लो humans के बारे में बात करूं मैं, तो humans have 46 chromosomes. 46 chromosomes का haploid number will be 23, and 23 chromosomes पे जितने भी genes हैं उनको आप genome कहते हो, उनको आप genome describe करते हो. इसी जीनोम को लेकर एक ब्रांच आया, and that branch was defined as genomics. Okay, genomics. To put it very simply, genomics is nothing but study of genomes. Okay, genomics is nothing but when you study genomes per se. और genome या फिर genomics दो टाइप के आपको हो सकते हैं. There can be two types, दो टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं. नंबर वन इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स. ओके, एक हो सकता है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, दूसरा हो सकता है व्हाट इज कॉल्ड एज फंक्शनल जीनोमिक्स. ओके, so one can be structural genomics, another can be functional genomics. Students, what do we really understand by structural genomics? Structural genomics is when you are understanding, or say for example you're mapping, or say for example you are sequencing the genome. जब आप जीनोम को मान लो अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसका स्ट्रक्चर जान रहे हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके डिस्टेंसेस क्या है क्रोमोसोम के, जीन के, देन न्यूक्लियोटाइड्स के, वो सारा चीज़ें आप स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में पढ़ते हो. एंड फंक्शनल जीनोमिक्स इज जस्ट एज द वर्ड सजेस्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द जीनोम. ओके, कि वो पर्टिकुलर मान लो जीन आपके पास है, ओके, उसका फंक्शन उस डीएनए में एग्जैक्टली क्या है. सो वो चीज आपको इन दोनों पॉइंट से समझ में आती है. वेयर कैन वी रियली अप्लाई दिस? आपकी इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन वुड बी इट्स एप्लीकेशंस. ओके, एप्लीकेशंस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट applications, particularly applications can be in the field of agriculture. Okay, in the field of agriculture, applications can be in the field of medicine. Okay, or it can also be in the field of therapeutics. You can also find application of genomics in case of forensic studies. सो ये दो या तीन एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से कि जहाँ पे आपको जीनोमिक्स पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है. सो देयरफॉर व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, वी टॉक अबाउट मेडिसिन, वी टॉक अबाउट forensic studies, all of these applications somewhere down the line primarily talk about the role of genome in each and everybody's cell or DNA, and what are they doing. So now from this concept, it was very utmost important for scientists to really understand a particular genome, which was called as human genome. And in order to understand human genome, they launched a project which is called as human genome project. Now students, human genome project जो था, it was launched by US
US Department of Energy and National Institute of Health. Okay, so it was launched by US Department of Energy and National Institute of Health. Actually ये इनिशिएटिव यूएस का था, बट यूएस अकेला ये चीज नहीं कर पाता, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने और लोगों के साथ टीम अप बनाया, तो उन्होंने और टीम जनरेट किया, उसमें सम other countries including USA like India, China, etc. were there. Okay, so multiple different countries participated in order to ensure that we find out the actual count or what is the genome like in case of humans. Okay, now they really wanted their aim, to be honest, their aim was to find out actual 3 billion base pairs of DNA. अभी अपना जो डीएनए होता है, ह्यूमंस का जो डीएनए होता है, इट इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर. इट्स ह्यूज. And what they were thinking was कि out of these 3 billion base pair, there can be what they found out, to be very specific, they observed that there are approximately 33,000 genes in ह्यूमन डीएनए. ओके, ह्यूमन के डीएनए में अप्रोक्सीमेटली 33,000 जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो आपको उनको वो ऑब्जर्व उन्होंने किया. ठीक है, और ये जब वो लोग फाइंड आउट कर रहे थे, द प्रोजेक्ट वाज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट. ओके, project was expected to start in the year 1990. Okay, and this project was expected to finish in the year 2003. So ये दो डेडलाइंस आपको याद रखने हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट है. So 1990 में प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ, स्टार्ट हुआ, and 2003 में प्रोजेक्ट was finished. So in this 13 years of life span of the project, they were able to find out that out of total 3 billion base pairs, we have in a human DNA, we have approximately 33,000 genes. Now these 33,000 genes, as you can see, देखो यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर बाई चांस 33,000 जीन्स आपके पास प्रेजेंट थे आउट ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर. Okay, so therefore out of 3 billion base pairs, they observed that 33,000 genes were present in the human DNA. Project 1990 started, 2003 finished. What were their basic aims, students? उनके aims क्या थे, वो जानना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले वो जान के लेते हैं कि भाई उनके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लेकर एम क्या था. सबसे पहला टू फाइंड आउट नंबर ऑफ जीन्स. ओके, कितने नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करना था उनको. देन उसके बाद उनको ये भी फाइंड आउट करना था टू डिजाइन टूल्स और टेक्निक्स, ओके, इन ऑर्डर टू रिकंसाइल द डेटा. जो भी डेटा उनके पास अवेलेबल था, वो डेटा को उनको रिकंसाइल करना था, हर एक चीज अरेंज करके. उसके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, टेक्निक्स डिजाइन करना, वो सब. देन ऑल्सो द थर्ड इंपॉर्टेंट दिस थिंग वाज एम वाज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. ओके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब क्या, इन्होंने जो सॉफ्टवेयर या फिर जो टूल्स या फिर जो डिजाइन वगैरह किया है, सॉफ्टवेयर है, टेक्निक्स है, वो सब बाकी लोगों तक कैसे पहुंच पाए, बाकी लोगों तक उनका रीच आउट कैसे रहेगा, वो सारा भी हो सकता था इनका एक तीसरा एम. एंड द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द एम वाज आल्सो टू डील विथ ethical, legal and social issues. Okay, so ethical, legal and social issues को भी इनको डील करना था. So over a period of time they were able to find out, as I said, कि 33,000 genes थे. But later, once they were successful in case of humans, other organisms were also considered. Okay,
और भी बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने कंसिडर किया था। उनको ये पता चला कि भाई और भी बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वन ऑफ द सच ऑर्गेनिज्म वाज वन ई कोलाई. ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया. देन दे वर आल्सो एबल टू फाइंड आउट इन organisms like rat. Okay, then they were also able to find out the sequence in Saccharomyces cerevisiae. So they were also able to do that. The Saccharomyces cerevisiae is also called as yeast. ओके स्टूडेंट्स, सो मतलब एक बार ये सक्सेस हुआ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, दे वर एबल टू डू द सेम काइंड ऑफ रिसर्च इन अदर ऑर्गेनिजम्स टू. ओके, सो दिस इज बेसिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की उनका एम क्या था, पॉइंट ऑफ व्यू के अंडरस्टैंडिंग का, उन्होंने कैसा किस तरीके से उसको सम अप किया. The next topic, what we're going to discuss is what is called as a DNA fingerprinting. Okay, students, DNA fingerprinting. Now, students, what is DNA fingerprinting? DNA fingerprinting, as we all know, everybody, okay, now almost every humans, okay, every, अगर मैं humans का ही बात करूं, every human, they share majority, okay, majority of the DNA. मतलब सारे ह्यूमंस में मेजॉरिटी ऑफ द डीएनए सेम है. अप्रोक्सीमेटली 99% डीएनए आपका सेम होता है हर एक, मतलब आप में और मेरे में 99% डीएनए एब्सोल्युटली सेम है. सो दैट 1%, अभी इनको अभी जैसे कि मैंने बताया 1%, वो जो 1% है, कैन आई से दैट मेक्स मी एंड यू यूनिक, me and you different. So therefore, whenever you want to identify some person, when you want to identify the genetic makeup of that individual, DNA becomes a very novel tool for identification. And in that case, fingerprinting or DNA fingerprinting helps us to identify how and what kind of that DNA is, what kind of that person is in terms of its genetic makeup. So that exactly that we talk here is what is called as DNA fingerprinting, in which one concept is very, very important, which is called as VNTR. VNTR stands for variable number of tandem repeats. ओके, मतलब ऐसे कौन से सीक्वेंसेस है कि जहां पे रिपीट हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर एक सीक्वेंस आपने लिया, वो सीक्वेंस कितना रिपीट हो सकता है एक गिवन पॉपुलेशन में या गिवन इकोसिस्टम में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वीएनटीआर. नाउ वीएनटीआर को समझते हुए आपको ये भी जानना पड़ेगा कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स. ओके, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स in DNA fingerprinting. So if at all we want to find out the genetic makeup of a particular individual, we can definitely go with this process. Okay, starting with सबसे पहला जो अपन डिस्कस यहाँ पे करेंगे is what is called as DNA isolation. Now students, what is DNA isolation is? DNA isolation is extraction of DNA from the sample. जो भी सैंपल आपके पास है वहां से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना. अभी क्या क्या सैंपल्स हो सकते हैं ना? सैंपल्स कैन बी आइदर इट कैन बी हेयर, इट कैन बी नेल्स, इट कैन बी ब्लड सेल, and particularly we're talking about WBC here. Then it can also be semen meaning sperm. सो वो भी हो सकता है डीएनए आइसोलेशन कर दिया. एक बार आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डीएनए आ गया है, डीएनए आ गया है, यू डू द नेक्स्ट प्रोसीजर विच इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर इज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन. स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन इज, जो आपको डीएनए मिला है ना, जो डीएनए आपको मिला है उसको आप एक एंजाइम से ट्रीट करते हो. तो यू सब्जेक्ट द आइसोलेटेड डीएनए, जो भी डीएनए आपको मिला है उसको आइसोलेटेड डीएनए बोलेंगे. और वो आइसोलेटेड डीएनए को आप सब्जेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ certain enzymes which are called as restriction
restriction endonucleases. Now students, what is a restriction endonuclease enzyme? It is simple an enzyme which can break down the DNA. So for example, आपके पास ऐसा कुछ DNA आया है, okay, ऐसा कुछ DNA है. जैसे ही आपने उसको restriction endonuclease के साथ treat किया, वैसे what is going to happen? This DNA is going to break down in fragments. DNA fragments में टूट गया है. So this procedure is nothing but the restriction digestion. So आपने क्या किया? Restriction digestion. तो मैंने पहले सबसे पहले सैंपल लिया, डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपके पास बड़ा सा डीएनए है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज लिया, उससे देखो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हो गया. रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन होने के बाद इतना जो बड़ा डीएनए था वो देखो फ्रैगमेंट में यहाँ पे टूट गया है. ठीक है. थर्ड प्रोसीजर इज व्हाट इज कॉल्ड एज जेल electrophoresis. Okay, gel electrophoresis. Now what is gel electrophoresis? Simple, very simple to understand is कि जहां पे आप ना सेपरेट कर रहे हो, there is separation of fragmented DNA. Okay, separation of fragmented DNA into डिफरेंट बैंड्स, अलग अलग बैंड्स में आप उनको सेपरेट कर रहे हो जो फ्रैगमेंट्स आए हैं. अभी इसके लिए करना क्या पड़ता है? तो आपके पास एक जेल होता है बच्चों, एक जेल होता है, उसको आप अगारोस जेल बोलते हो. एक ऐसा जेल है, ओके, ऐसा जेल है. इस जेल को यू सब्जेक्ट और यू कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एक बैटरी लगा देते हैं, एंड मान लो कि आपका ये डीएनए है यहाँ पे, तो यू लोड द डीएनए हियर. ठीक है. अभी इतना आपको पता होना चाहिए कि डीएनए जो है इनहेरेंटली उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है. तो देयरफॉर जैसे मैंने इधर करंट चालू कर दिया, कैन आई से दिस डीएनए, ये जो डीएनए मैंने इधर इनपुट किया है, इट विल स्टार्ट मूविंग. अब ये मूवमेंट कैसे रहेगा? द movement of DNA will be based on size. Okay, movement of DNA will be based on size. तो साइज के हिसाब से डीएनए मूव करना चालू करेगा, और जैसे जैसे डीएनए मूव करना चालू करेगा यू विल फाइंड समथिंग लाइक ऐसा कुछ बैंड मिलेगा. बैंड. ओके, बैंड मिला. अभी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या? एक बार आपको बैंड्स मिले, the fourth procedure is what is called as southern blotting. अभी ब्लॉटिंग मतलब क्या? देखो आपके डीएनए अभी कहाँ पे है, करंटली कहाँ पे डीएनए है? करंटली आपका डीएनए जेल में है. सो व्हाट आर यू डूइंग नाउ इज यू आर ट्रांसफेरिंग द डीएनए present on the gel to the nitrocellulose membrane. You are transferring the DNA to the nitrocellulose membrane. Nitrocellulose membrane is a paper. It's a nitrocellulose paper. एक टाइप का पेपर है वो. ठीक है, वहां पे ट्रांसफर करेंगे. तो मतलब पूरा डीएनए जो है, पूरा डीएनए अभी आपका पेपर पे है. Okay? पूरा डीएनए आपका एक पेपर में है. सो ये सी फॉर एग्जांपल इस तरीके से कुछ आपको बैंड्स आए हैं, तो पूरा का पूरा आपका पेपर में है. नेक्स्ट प्रोसीजर क्या? सो यू हैव डन सदर्न ब्लॉटिंग. फिफ्थ इज यू आर एक्चुअली डूइंग hybridization. Now what is hybridization? हाइब्रिडाइजेशन इज कि आपका जो सैंपल डीएनए है ना, सैंपल डीएनए मतलब अभी तक जिसके साथ आपने ट्रीटमेंट किया. ठीक है, तो आपका जो सैंपल डीएनए है, दिस सैंपल डीएनए इज कंबाइंड विद व्हाट इज कॉल्ड एज द प्रोब डीएनए. स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्रोब डीएनए? प्रोब डीएनए इज अ टाइप ऑफ अ सी डीएनए मतलब एक टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है. तो वो जो लेबोरेटरी में जो आप बनाते हैं, तो ये डीएनए जो लेबोरेटरी में बनाया है उसको आपने मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया है सैंपल डीएनए के साथ. जब वो सैंपल डीएनए के साथ कंबाइन हो जाएगा तो नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर इज व्हाट इज कॉल्ड एज
फोटोग्राफी, ठीक है, मतलब you're subjecting this complex जो ऊपर बना, you're subjecting that complex to x-ray. ओके, सो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है आपका प्रोब और सैंपल का, इस कॉम्प्लेक्स को आप किसके साथ ट्रीट करते हो? एक्सरे के साथ ट्रीट करते हो. वंस यू ट्रीट दैट विद एक्सरे, आपको बैंड इस तरीके से कुछ मिल जाते हैं. बोलने का मतलब क्या है कि जब आपने डीएनए का प्रोसीजर पूरा स्टार्ट किया तो ये जिसका भी डीएनए होगा उसका ये बैंड का पैटर्न कुछ इस तरीके से है. सर इससे आपको क्या समझ में आता है? एप्लीकेशंस आपके इसके अंदर क्या क्या है? एप्लीकेशन स्टूडेंट्स एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है. एप्लीकेशंस में आप बेसिकली व्हाट यू डू इज, से फॉर एग्जांपल you can have एप्लीकेशंस. कुछ एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल टू सेटल इंश्योरेंस क्लेम्स. ओके, इंश्योरेंस क्लेम्स, अगर किसी के इंश्योरेंस क्लेम्स है जो लीगल इश्यूज में फंस गए हैं, उनको आप सेटल करवा सकते हो. देन यू कैन ऑल्सो हैव मैटरनिटी टेस्टिंग विच इज इन शॉर्ट पेरेंटल टेस्टिंग. बच्चा और जो उनके पेरेंट्स रहेंगे उनका डीएनए मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ एथिकल इश्यूज, कुछ लीगल इश्यूज में अगर फंस गया ये मैटर, तो वहां पे भी आप इसको हेल्प ले सकते हो. सो बोलने का मतलब कि काफी मॉडर्न एडवांस टेक्निक है ये, जहां पे आपको ये समझ में आता है कि भाई जस्ट विद द हेल्प ऑफ सम मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड मेथड्स यू आर रियली एबल टू फाइंड आउट the genetic makeup of an individual, which is in itself is a very fantastic thing. And in modern biotechnology or in modern sciences, this technique paves a very important role and also helps us to identify people genetic makeup in a very quicker time. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये दो मॉड्यूल्स, ये जो जो दो टॉपिक्स अपन ने जो डिस्कस किए हैं वो कवर है. दे वेरी शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक, दे वेरी सिंपल टॉपिक्स. आई वुड जस्ट रेकमेंड एंड सजेस्ट यू टू रीड द टेक्स्ट बुक वंस. एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, आपको बेटर तरीके से और समझेगा. मैंने जो यहाँ पे पढ़ा दिया, दीज आर मोर ऑफ अ हाईलाइट्स एंड मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड टीचिंग. सो इफ यू वांट टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दैट, यू कैन डेफिनेटली रेफर टू टेक्स्ट बुक. एंड फिर भी अगर कुछ डाउट्स बचते हैं या कोई डाउट आते हैं, definitely get back to us. Please put them in the comment section, we'll reply you. And also I will see you in the next chapter. This chapter is finished. Molecular basis of inheritance, we have covered everything, we have done with it. Now we are going on to the next chapter and we'll discuss the next chapter very soon कि कौन सा chapter अपन start करेंगे. We'll talk about it. Okay, up till then I hope that आपको ये chapter समझ में आया है, inheritance भी समझा होगा, molecular भी समझा होगा. So I hope overall picture काफी ज़्यादा better तरीके से clear है. I'll see you in the next module, a very next interesting chapter. Till then, take care and stay safe.